ठीक है। इसमें, क्या बोला मुझे? A very good morning, everyone. Thank you all for joining us today for this session. It is said that we should start every day with a big smile, a positive attitude, and a fresh mindset. Well, what else can be better than an energizing ICAI motto song which radiates zeal and enthusiasm? I request everyone to kindly stand up for the ICAI motto song. य एष सुप्तेषु जागृति य एष सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 I invite on the stage our speaker for the session, CA Rajesh Agrawal sir and CA Ajinkya Randive sir. Do you know that taxes have become as important as breathing nowadays? Yes. So it is very important to have a proper understanding of these taxes. In 2017, an important aspect of taxation was introduced. It is not just a tax reform, it is an economic model. It is not just a tax collection, but a new age management and governance. The very purpose of arranging this session is to have an understanding and knowledge of the nitty-gritty of GST, and also to know how important skill it is to solve the potential problems. This program has been organized by Pune branch of Vikasa jointly with all the branches mentioned in this flyer. I would like to invite CA Ajinkya Randive sir, the managing committee member and immediate past secretary of Pune branch of WIRC of ICAI for the opening remarks. Thank you. Good morning, everyone. It's really a pleasure to see so many of you early at this time. Last what I remember was I attended, I guess during my articleship or during my final examination was the time when I attended a seminar or lecture early this morning. So really hats off to you and welcome to you all to the Pune branch. I hope you are enjoying the GST series. And today we have the best speaker and my committee colleague, C. Rajesh Agarwal for GST. He is a GST expert and dedicated, since 2017, he has dedicated his entire life only for GST purpose. Even if I have any queries or any expert opinion, I do look forward to Rajesh Bhai only in the same. So Rajesh Bhai, welcome again. And yes, I'm also happy to hear you listen, sharing your knowledge here. Thank you. Thank you, sir. Today we have with us CA Rajesh Agrawal sir.
Born in Parbhani district of Maharashtra, Rajesh sir pursued CA course by coming to Pune. He started practice in indirect tax, that is Central Excise, Customs and Service Tax in 2006 in Pune. Eventually, he developed practice with his family-owned partnership firm, SRA and Company. Since 2016, he has been elected as the managing committee member of Pune branch of WIRC of ICAI. He got a chance to serve in different roles like the treasurer, secretary, vice chairman, Vikasa chairman, and also became the chairman of this organization. Sir is also serving as the deputy treasurer of Lions Club at district level. Rajesh sir has experienced the work of auditing of excise records, preparation and verification of statutory records of excise and service tax, drafting of various replies to the Central Excise Department, drafting of appeal with the commissioner, etc. He has worked as the assistant manager of SSPM and Company, Pune. I request CA Ajinkya Randive sir to felicitate Rajesh sir. Thank you, sir. I request Rajesh Agarwal sir to address the audience. Good morning, friends. I thank Pune Vikasa for considering me as a faculty of today's session, because as per my structure, I have selected some other faculty for a day. But Vikasa Chairman Pranav Apte sir has requested me to please you take a session of today. But frankly, I give you disclaimer, in last 6 months or more than that, whatever GST has been implemented, I never filed any GST return in last 6 years. Still, I can guide you at my best with respect to the provisions are concerned, with respect to precautions are concerned. Definitely, I assure you, you will take something new with you, because I will share all my practical experiences with respect to the return filing is concerned. Other provisional part we have already covered in last 4 days, right? Some may be not there for all 4 days, but we will briefly cover the implications of provisions with respect to the return filing is concerned. Because if you know what is zero rated supply, then only you can understand the provisions behind zero rated supply. If you don't know zero rated supply, then how you will give effect to that transaction in your return filing? What is important to understand the concept? What is reverse charge? What is covered under reverse charge? Many industries till date are not paying GST under reverse charge on many items. That's why I asked some questions before starting this. Are you going through the financials of your client? Because what client is giving with his understanding, best of his understanding. But we are a consultant. We are filing return of our clients. We must know GST law basic and correct filing of GST return in total. So you can take a help of your office seniors and the principal wherever required. But what I found, this is a routine job for all articles or employees in their offices. Data आता है और मैं return file कर रहा हूँ. Data आ रहा है, मैं return file कर रहा हूँ. There is no new implications we are discussing with our principal or seniors.
मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। आपको कुछ अगर दिखता है कहीं पे कुछ है, अभी वी विल टेक दिस सेशन वेरी इंटरेक्टिवली। कितने लोगों ने देखा है बैलेंस शीट में बैलेंसेस रिटर्न ऑफ, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसेस रिटर्न ऑफ, यस। तो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन फॉर जीएसटी, बैलेंसेस रिटर्न ऑफ? आपके P&L में बैलेंसेस रिटर्न ऑफ लेजर है, तो हाउ यू विल टेक इफेक्ट, whether you will add this entry in your exempt turnover, what is the GST implications? Okay, नहीं मालूम है ना तो बोल दीजिए, क्योंकि दिस सेशन इज फॉर लर्निंग फॉर यू एंड मी बोथ। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको मालूम रहना चाहिए, मगर समझना जरूरी है सबने। यू टेल मी। नो, किसी कोई, पाटिल बोला। ओके, तो शी वांट टू से कि विथ रिस्पेक्ट टू द रिटर्न ऑफ ledger, whatever input tax credit involved in that ledger have to be reversed. That 180 days वाला जो प्रोविजन है, द पार्टी को हमको पेमेंट कब करना है, विद इन वन, बस पार्टी वी हैव टू पे विद इन 180 days. Balances return of मतलब we have not paid anything to that party, the proportionate reversal will come, right? But how you will show this transaction in GSTR 9 reconciliation? Because usually this transaction is reflecting under the credit side of profit and loss account, even though indirect income. How you will reflect in 9? Bolo. Absolutely correct, but you have to reconcile your profit and loss account in 9 and 9C. So you take total of credit side of profit and loss account, and how, currently whenever you prepare financials, it is added in your income. Absolutely. See, very good presentation, I must say, because many accountant, they mention these entries under exempt turnover because there is no tax on that. Whatever is not taxable is exempt for them. Whatever is not taxable is exempt, simple. But it is not like that. If you mention these figures under exempt turnover, rule 42-43 will trigger. If unnecessary items, if you mention under exempt turnover, you have to face the notices. Right? I am just on that point. This slide. GSTR 1, first return on 11th of every month we file. Usually, as you said, we collect data from our client, sales register. GST return is outward supply return. Suppose I have purchased, as rightly she has mentioned, I have purchased some services from my supplier. Because of deficiency of supplier, I have issued debit note. 1 lakh का invoice था, 10,000 I have debited to the supplier. So where to mention this debit note in GSTR 1? Can anyone? Where to mention this debit note in GSTR 1? Simple है ना? बोला कोई? शीट में टैब होता है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट वाला टैब होता है, राइट? बट व्हाट इज दिस स्टेटमेंट अबाउट आउटवर्ड सप्लाई? इज इट माय आउटवर्ड सप्लाई? इट इज माय इनवर्ड सप्लाई. Then
it will not reflect in R1. Okay. So my supplier has issued me credit note without GST. So where he should reflect that credit note in GST R1 as a supplier. Now it is a outward supply related to the outward supply, but he has issued me credit note without GST. Because what is deductible under section 15, he just touched yesterday, Chaitanya, in valuation. What is deductible as a discount? It should be predetermined and all we have discussed. So consider that he has not given you credit note with GST. So where to mention this credit note in GST R1? These are financial credit notes. And financial credit notes are not coming in GST R1. We cover only credit notes and debit notes issued under section 34. तो सबसे पहले हमको देखना है what is 34. For what purpose you can issue credit note is specially mentioned. You have to ask your client, give me the reason for that credit note. For difference in quantity, difference in rate, difference in quality, cancellation of contract. Reasons are very specific. और मैंने देखा है कुछ तो पेनल्टी बोल के क्रेडिट नोट इशू कर दिया. Delayed supply. Can it be a credit note? कोई someone? Your customer is asking you to issue credit note for a delayed supply. Can you issue credit note under section 34? Or many such reasons. Cash, he paid some bill discounting charges. Your customer has paid bill discounting charges. और उन्होंने बोला सर आप क्रेडिट नोट दे दो इसका, because I have spent for you. So can I issue credit note for such things? No, because credit note under section 34 can be issued for only specified purposes. और mind it, जो भी प्रोविजंस है आपको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड कंसिडर करना है. क्रेडिट नोट आपको सबको पता है कैन बी इशूड ओनली अप टू 30th November ऑफ द नेक्स्ट ईयर फॉर द प्रीसीडिंग ईयर. मतलब दिस ईयर 30th November तक मैं कौन से क्रेडिट नोट इशू कर सकता था? 22-23 एंड 23-24 का जो क्रेडिट नोट्स है मैं कब तक इशू कर सकता हूं? 30th November 24. But what about the debit note? Same period will applicable. There is no limitation period for debit notes, right? आप सबको पता है GST R1 में आप अमेंडमेंट कॉलम है, यू अमेंड GST R1 B2B, उसके आगे रहता है B2BA, B2C उसके आगे रहता है B2CA, समथिंग लाइक दिस. क्रेडिट नोट उसके आगे, यू कैन अमेंड थिंग्स. What about 3B? आपने एक महीने में 1 लाख रुपया ज्यादा भर दिया गलती से, तो up to what extent you can adjust this 1 lakh? What is the limitation period? As like GST R1, you can amend only up to 30th November of the next year, right? अगर जो भी गलती है आप कब तक अमेंड कर सकते हो? नेक्स्ट ईयर 30th November. उसके बाद आप उसका इफेक्ट दे सकते हो उसको? नहीं. GST R1 related amendments you can make only up to 30th November. Like आपका B2B में कुछ चेंज हो गया, आपका 21-22 का कस्टमर बोल रहा है सर वो थोड़ा सा गलत हो गया आपका. Can you amend GST R1 for 21-22 right now? 22-23 right now? No. Right? तो जब GST R1 हम अमेंड नहीं कर सकते हैं तो 3B का लिमिटेशन पीरियड क्या है?
अगर मैंने 17-18 में अभी मुझे पता चलता है असेसमेंट में आई हैव पेड 5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा, तो क्या करेंगे अब उसको? कैन यू क्लेम रिफंड? किसी को पता, किसी ने किया है रिफंड का काम? जीएसटी रिफंड? नो. There is a limitation period for refund. You can claim only up to 2 years from the relevant date, and relevant date they have defined the due date of the monthly return. अगर 17-18 का मार्च का भी ड्यू डेट ले लेते हैं हम, तो अप्रैल 18 से लेके 2 साल, राइट? तो इस what it means, you can't claim refund. There is no limitation period for adjustment of taxes paid in 3B. जो भी मिस्टेक 3B में होते हैं, there is no limitation period. तो जब भी हम इसको रेफर करेंगे कोई भी चीज को, अभी सब लोग 2B का रिकंसिलेशन कर रहे हैं, बट हाउ यू आर रिफ्लेक्टिंग दैट 2B इन योर रिटर्न? 17.5 लोग कितने लोग दिखा रहे हैं कि 17.5 में कितना क्रेडिट है? 4A में दिखा रहे हैं, 4A में, and what about 4B? Any other reversal? उस बुक्स में ही नहीं है, तो दिस इज टेम्पररी रिवर्सल. नहीं, मतलब आपकी ही पार्टी के परचेसेस है मगर आपके बुक्स में नहीं है, तो यू विल क्लेम इन द नेक्स्ट मंथ व्हेनेवर इनवॉइसेस विल कम. ओके, तो दिस presentation is must. Nowadays, department is issuing n number of notices with respect to this circular. They have issued circular just for presentation of your input tax credit, and you have to present input tax credit according to the circular only. 2B figure you have to mention in other input tax credit other column, and whatever credit is not eligible in Rule 42, 43 and Section 38, this column. And other reversal, temporary reversal. Rule 42, 43 is a permanent reversal and 38, but other reversal में जिसका आपको 180 days का पेमेंट नहीं हुआ है, जो आपको रिक्रेडिट कर लेना है, in future you are eligible for that credit after you paid to that vendor or that invoice comes to you. The reasons behind that can be anything, but this presentation is must. If you are not following in your offices, I suggest you to please read circular and give effect to that in your working, right? अभी कौन से लेजर्स है P&L के जो हम चेक करते हैं? अभी वैल्यूएशन हमने देखा कल कि सर ने कहा था कि गुड्स, उसका ट्रांसपोर्ट, उसका पैकेजिंग, ये सब पे टैक्स लगेगा. 1 लाख का मोबाइल है, 10,000 का पैकिंग है, तो 1,10,000 पे 18% से मुझे टैक्स देना पड़ेगा. नाउ व्हाट वेंडर हैज डन, 1 लाख का इशू इनवॉइस कर दिया 18% पर, एंड अगेन ही इशूड वन डेबिट नोट एट द रेट ऑफ 5% बिकॉज ट्रांसपोर्ट इज टैक्सेबल एट 5%. Is it correct? Why to pay tax on this 10,000 at 18%? He considered that transport charges taxable at 5% because transport is taxable at 5%. Why it is correct and why it is not correct? कोई ऐड करेगा? Someone? सर ने कल बताया, बहुत अच्छे से बता दिया कि 1 लाख पे नहीं, 1,10,000 पे लगेगा. Right? Why 110? 10,000 पे जो टैक्स है वो 5% क्यों नहीं लगेगा और 18% क्यों लगेगा, और वाइस वर्सा? Yes. See, you are online. It is a composite supply. It is a composite supply. I am a supplier of mobile and not a transport services. So my principal supply is a supply of mobile. I am not a transporter, and these are all ancillary services, incidental services to my principal supply. There are 2 services. One is supply of mobile
and second one is transport वगैरह. So where there is a bundling and it is naturally bundled, can you give only transport services to the customer? No, you are not a transporter. It is naturally bundled. Because it is naturally bundled, you have to composite. It is a composite supply and taxable for a gross amount. So why I mentioned this? There will be n number of cases in your filing of return. Like your client is collecting labor cess from the customer. See, in case of contracts, subcontracting business or construction business, contractor is collecting labor cess from the principal contractor or the company which is giving contract. So how to give effect to this labor cess collected from the customer? This is a statutory collection from the customer. Whether it is taxable, first of all, labor cess. See, I am giving some examples like a labor cess. Maybe in your case, something else your client is collecting from the customer. But you have to consider the provisions. I am discussing different provisions which we have already covered in last 4 days. Right? Labor cess, whether it is taxable. I am collecting this from my customer and depositing with the authority. See, section 15.2, very clear. 15.1, whatever is the transaction value is taxable. If it is arm's length and it is unrelated party. If the transaction is with unrelated party, transaction value with the taxable value. 15.2, whatever collected from the customer. क्या बोल रहा है वो? Whatever collected from the customer except GST. Except, तो except GST में सेस आएगा क्या? If it is not excluded in valuation, you have to pay tax on that. Simple as. Now you are collecting TCS in case of trading. TCS, if the supply is more than 50 lakhs and all, that provisions is there now. Abhi, 15.2 is excluding only GST. Now you are collecting TCS. And how you are calculating TCS? On the gross amount. 100 rupees plus 18 rupees and 118 पे हम TCS collect कर रहे हैं 0.1%. Right? अभी इसके ऊपर GST कैसा भरेंगे? Already GST के ऊपर हम TCS दे रहे. They have issued clarification. No need to pay GST on TCS part. They have excluded this TCS part. Otherwise, there was very misconception how to pay GST on TCS. But they have issued clarification. This is so serious. Even TCS can be covered to calculate GST. Whereas we are paying already TCS on GST. तो हमको मैथ एक्सपर्ट होना पड़ता था. Right? Export transaction किसने डील किया है in GSTR1? Export. Yes. How many types of exports are there? Exports are 2 types. Export without payment of tax and with payment of tax. तो with payment of tax and without payment of tax में क्या फर्क है? कस्टमर से लेंगे क्या? नहीं लेंगे. Without collecting, we are depositing with the government. Right? So this is for claiming refund. We can opt for different options. Export without payment of tax में हम क्या कर रहे हैं? We are filing accumulated input tax credit refund. Right? Under section 54, read with rule 89. And for with payment of tax, again, section 54, readable with 96 and 89. अभी मुझे बताइए ये दोनों का रिफ्लेक्शन आपका GSTR1 में कैसे अलग होता है?
just selecting one column or what? राइट, चूज कर लिया मैंने, राइट, तो वो हमने कर लिया, दो कॉलम चेंज कर लिए, दोनों में भी 18 डाला तो भी विदाउट पेमेंट अगर रहेगा तो उसका टैक्स आएगा नहीं. Once you choose without payment of tax and after also that you choose 18%, tax will not be get calculated. That's not a problem. So if it is with payment of tax, you have to mention shipping bill details and port code. If you don't mention these two things, your auto refund process will stuck. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप गुड्स, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट गुड्स, whenever you export goods with payment of tax, you have to mention shipping bill number and port code. It is mentioned on the shipping bill. मगर अगर आप नहीं करते हो, this data will not matched with आइसगेट डेटा और आपका रिफंड आएगा ही नहीं कभी. आइसगेट को ये डिटेल्स शेयर होगा ही नहीं रिफंड के लिए. तो यूजुअली these two columns are optional in that particular sheet, and most of time we miss that two columns because it is optional. There is no red tick in the sheet. So my observation is you should study whenever it is with payment of tax, whether I have to, it is export of goods. If it is export of goods, shipping bill number and port code, don't miss. Otherwise, or very importantly, you can add these two columns in near future whenever you realize this mistake. There is no limitation period like 30th November for other amendments. For this special amendment, with respect to with payment of tax, you can add shipping code, shipping bill number and port code in near future anytime. There is no limitation for to amend these two columns. Very important. अगर किसी का रह गया है और रिफंड नहीं आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, ऑफिसर को बोल रहे हैं, ऑफिसर बोल रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं है. अरे इधर तो टाइम निकल गया अमेंडमेंट का, हमको लगता है गया अभी, उधर से भी कुछ होने वाला नहीं. कस्टम पीपल आर वेरी स्ट्रिक्ट. अगर आपका आइसगेट को रिफ्लेक्ट होगा तो ही आपको रिफंड मिलेगा. व्हाट टू डू? तो यू कैन अमेंड एज टुडे आल्सो. 17-18 अगर आपने एक्सपोर्ट किया है और उसका डिटेल डालना रह गया, उसके वजह से रिफंड नहीं आ रहा है, टुडे आल्सो यू कैन ऐड दैट शिपिंग बिल नंबर एंड पोर्ट कोड in your that particular entry of GSTR 1. अब ये बहुत बेसिक चीजें है. B2B, what is B2B, what is IGST, CGST. Again, I just cover one important line, place of supply. Place of supply usually जैसा सर ने बताया था कल, जो IGST वाला है वो तो हम पर्टिकुलरली डाल देते हैं दैट पर्टिकुलर स्टेट. जैसे अगर हमने यहाँ से गुजरात सप्लाई किया और उसका GSTN शुरू हो रहा है 24 से, तो 24 गुजरात फटाक दिशे हम डाल देते, वो वेरी इजी. बट इन केस ऑफ CGST, SGST हम क्या करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाईज महाराष्ट्र, राइट. प्लेस ऑफ सप्लाईज महाराष्ट्र सिंपल. मगर हमने और एक एग्जांपल देखा था, दिल्ली का एक केस देखा था हमने. महाराष्ट्र, 3 स्टेट्स आर इन्वॉल्व. तो इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द इमोबल प्रॉपर्टी. माय इमोबल प्रॉपर्टी इज इन सपोज Bangalore. I am located in Maharashtra. I don't want to take any registration in Bangalore, right? And my customer is in Gujarat. I am issuing invoice to my customer located in Gujarat, but for the property located in Bangalore. Usually what we do, my customer has given me GST number of Gujarat. We put 24 and here place of supply Gujarat. But what is place of supply?
आपको चेक करना है कितने मिस्टेक्स होते हैं, तो सिंपल है, आप 2B में जाइए एंड जस्ट पुट फिल्टर ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई. You will find a number of states are there. अगर दूसरे स्टेट है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि IGST क्रेडिट may not be eligible because that IGST belongs to Bangalore, Karnataka, where the property is located, but my customer is located in Gujarat. Whether this IGST I have charged from Maharashtra is for Gujarat IGST. You know this system of IGST and CGST. CGST is belongs to central government. SGST belongs to. What about IGST? 50-50. अगर मैं IGST और प्लेस ऑफ सप्लाई में गुजरात डाल रहा हूं, तो इसका रेवेन्यू किसको जाएगा? किसका रेवेन्यू है ये? एक्चुअल रेवेन्यू किसका है? कंजम्पशन किधर हो रहा है और रेवेन्यू किधर जा रहा है? दैट एंगल वी हैव टू थिंक. ये मैं आपको सिर्फ सैंपल बोल रहा हूं जो मुझे ध्यान में आ रहा है, मगर आपको ये केयर हर चीज में लेना है. बीट क्रेडिट नोट, इट शुड बी अंडर सेक्शन 34. अगर सेक्शन 34 में बैठ नहीं रहा है तो आपको समझना है आई शुड इशू फाइनेंशियल क्रेडिट नोट. और वेरी सिंपल, अभी क्रेडिट नोट तो ऐसा हो गया, अरे वो इनवॉइस में गलती हो गया सर, टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है क्रेडिट नोट इशू कर दो और आज नया इनवॉइस दे दो. सिंपल है ना? ये लोग रेगुलरली करते हैं या नहीं करते? अगर कोई कस्टमर बोलता है यार सॉरी यार वो इनवॉइस बुक करने का रह गया मेरा, अभी तू क्या कर, उसका क्रेडिट नोट मार दे और नया इनवॉइस दे दे आज के डेट का, तो ही मैं पेमेंट दूंगा. होता है ऐसा? वेरी वेरी कॉमन थिंग्स. बट कैन यू टेक क्रेडिट ऑफ दैट क्रेडिट नोट इन सेक्शन 34? क्योंकि फॉर व्हाट क्रेडिट नोट यू कैन इशू इज गिवन अंडर 34. Whether there is any deficiency in quality, quantity, rate, cancellation of contract, nothing. Just to adjust your payables, you are issuing credit notes. तो जो हम लाइबिलिटी हमारा कम कर रहे हैं क्रेडिट नोट से, हम 100 रुपीज B2B सेल, 100 रुपीज B2C सेल, माइनस क्रेडिट नोट 50 रुपीज. कैन वी रिड्यूस आवर लाइबिलिटी? Think twice. Whenever you deduct liability by any other means, 3 बार सोचना चाहिए. We put reverse charge में yes. तो we was there only. जो डिस्कस कर रहे थे हम अभी बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑन द सप्लायर ऑफ सर्विस व्हेन माय सप्लाई इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट? व्हाट इज इम्प्लीकेशन इन माय हैंड? अभी अकाउंट्स रिटर्न ऑफ, शी सेड कि नो आई हैव टू रिवर्स माय इनपुट टैक्स क्रेडिट बिकॉज आई हैव अवेल्ड क्रेडिट एंड नाउ आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग टू द वेंडर. What about the reverse charge turnover in the hands of supplier? किसी ने इसको देखा है कभी? डील किया है? Any of your client who is in great. It is not implication, it is just a presentation. I am asking implication, मतलब क्या लॉस होगा, क्या प्रॉफिट होगा, हाउ बुक्स में कैसा इफेक्ट आएगा जीएसटी का. जीएसटी में पूछ रहा हूं. अभी तुम बोल रहे हो जीएसटी नहीं आएगा. एज अ रिसिपिएंट देयर इज नो लायबिलिटी ऑन द प्रोवाइडर. Suppose I have one company in which I have given some services of sponsorship, like Pune branch of ICAI. हमने क्रिकेट का इवेंट किया in the month of January. We have received total 30 lakhs rupees
right? Out of 30 lakhs, I am sharing actual figures. 17 lakhs we have received under sponsorship. And remaining 30 lakhs only entry fees on which we have paid GST under forward charge. The invoices received from different agencies of rupees 30 lakhs with GST, my staff has availed input tax credit. Is it correct? So the answer is no. Because if you refer section 17 is apportionment of input tax credit. Section 17(3) is said कि exempt turnover for this section 17 for this section includes exempt turnover as defined in the act, that is by notification, nil rated supply, right? And reverse charge turnover, which is taxable in the hands of recipient, and turnover in equity, turnover in schedule 3 items. Usually what is schedule 3 items? How you reflect in GSTR1? Suppose I am a builder. Someone said me I am filing returns of a builder. I am a builder and I have received completion of the project. So whatever sale of flat occurred after the receipt of completion certificate, is it a exempt turnover? Is it a exempt turnover? Because it is a schedule 3 item. Up to the completion, it is schedule 2 item. Up to the completion, as soon as I receive completion, it became a schedule 3 item. How? Whether it is a exempt turnover. Only if it is exempt turnover, I mention it under GSTR1 or 3B. So is it my exempt turnover? Is it my non-GST turnover? 2 columns are there: exempt supply and non-GST supply. So what is it? Non-GST supply. But friends, my opinion is, as Swapnil also elaborated on this, जिसने भी पहले दिन सप्लाई सुना है, Schedule 3 is neither goods nor service. If anything is not a goods nor a service, can it be a supply? If anything is not a supply, can it be a non-GST supply? हो सकता है क्या ऐसा कुछ? By mentioning under non-GST supply, you are unnecessarily just अपन बोलते हैं इनवाइट कर रहे हैं हम प्रॉब्लम्स को. Department came to know there is a completion certificate, non-reversal of input tax credit, non-payment of GST under reverse charge on TDR portion. So many implications of taxation will come as soon as you declare non-GST supply. Rule 42, 43. क्योंकि non-GST supply is already covered under exempt supply. If you read the definition of exempt supply, that covers non-GST supply. What is non-GST supply? Petrol, diesel, liquor. These are out of the purview of GST. But these are supplies. Even though these are out of the purview of GST law, but these are supplies. Right? रिवर्स चार्ज में हमने क्या बोला? प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा. क्यों आएगा? 17(3). पढ़ना, किसी को भी अगर इंटरेस्ट है तो 17(3 रीड करना. दिस अफेक्ट मेनी इंडस्ट्रीज इन आवर क्लाइंटल. मेनी इंडस्ट्रीज. कोई अगर शेयर्स में ट्रेड कर रहा है, किसी के पास लिक्विडिटी पड़ा है, वो क्या कर रहा है? म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, शेयर्स में डाल रहा है. तो आप तो देखते ही नहीं है इन्वेस्टमेंट. When you review your client's financials, you only check sell side. किसी ने इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ध्यान दिया है रिटर्न फाइलिंग में? कशासाठी? फॉर व्हाट पर्पस?
Not, I am filing for GSTR 1 and 3B. Rule 42 will trigger if there is a transaction in shares, equity, mutual funds. There is a valuation mechanism is given. Whatever sale occurred in that year, month, 1% of the sale price will be your exempt supply. Is given in Rule 42. Valuation also given, 1% of your sale price will be your exempt supply. So these are the precautions we should take in filing of return. अगर हम return file कर रहे हैं and 73 is there, we have to give effect to 17(3). Whenever we mention exempt supply while filing GSTR1, we should check Rule 42 when we file 3B. Exempt supply is equal to Rule 42. कितने लोगों ने देखा है ऐसा? Exempt supply Rule 42. किया है कंप्यूटेशन किसी ने Rule 42 का? नहीं किया। मगर ऐसा होता है क्या किसी के पास exempt supply नहीं है? हुआ है कभी ऐसा? किसी का तो रहेगा exempt supply other than interest है, other than dividend. I'm not going through this because due dates, I think most of you know. 3B is filed on 20th. GSTR1 we file on 11th. Quarterly return 13th वगैरह. We have covered this. We have covered this supply. Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3. Schedule 1 हमने देखा कि transactions without consideration with the related party. अभी क्या हो सकते हैं? Whenever you file return, you usually concentrate on the financial transactions. अगर कोई क्लाइंट है और उसका ब्रांच है अदर स्टेट में और उनका और रजिस्ट्रेशन है उधर, ऐसे किसी ने रिटर्न फाइल किया है जो क्लाइंट के मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, किसी ने फाइल किया, यू फाइल्ड ओवरराइड. Have you applied Schedule 1 for that client? See, in GST, these two are distinct entities. Branch offices for all laws the same entity, but for GST purpose, this is a distinct entity. You have to take separate registration, right? Once it is a separate registration, these are related party. Because in the definition of related party, they have included distinct entity. Once your branch is related party, the transaction without consideration is taxable. Schedule 1, simple. अगर मैं मेरे वाइफ का रिटर्न फ्री में फाइल करता हूं, तो कैन आई हैव टू पे जीएसटी ऑन दैट? करना पड़ेगा ना. सेम लाइन पे अगर कोई काम मैं अगर ब्रांच ऑफिस का करता हूं पुणे में बैठ के, उसका मार्केटिंग कर रहा हूं, उसका अकाउंट्स कर रहा हूं, उसका जीएसटी रिटर्न कर रहा हूं, so many things I am doing from Pune for my branch office located in other state. तो उसको क्रॉस चार्ज किया है क्या आपने? करेक्ट. स्टॉक ट्रांसफर को होता है तो उसका भी वैल्यूएशन मैकेनिज्म है. See, we have not covered valuation provisions in detail because it is separate topic in itself. So we have just touched yesterday valuation section 15. So we have not covered rules. For the rules, I will add very important point in valuation. Whenever there is a transaction with related party, ask your client to issue invoice for ₹10 at least. For ₹10, 100, 1000, lakh, whatever client desired. Why? Because there is a provision in the GST law. In valuation provision, there is specific proviso which states whatever value declared in invoice is deemed to be the market price
for the purpose of valuation if recipient is eligible for input tax credit. Most of the cases, whatever I charge to my client, my distinct entity, my related party is eligible for input tax credit. Most of the time, whenever my bill, my invoice is eligible for input tax credit to the recipient, my related party, whatever price declared in the invoice is deemed to be the market price. अगर आपने 10 रुपए का इनवॉइस नहीं किया, क्या होगा? डिपार्टमेंट विल कम. ओके, आपका ब्रांच है, show me your cross invoice, cross charge invoice. You are giving so many support services to your branch office. So many services we are giving to our branch office. What about the taxability? अगर 10 रुपए का इनवॉइस किया रहता तो अभी डिपार्टमेंट आएगा तो 10 रुपया मानेगा क्या? वो बोलेगा मार्केट प्राइस ले. इनवॉइस बनाता था तो वो डीम्ड प्राइस रहता था 10 रुपया. अभी तूने इनवॉइस नहीं बनाया, अभी मार्केट प्राइस लेना है. ठीक है, मार्केट प्राइस ले लिया. सर्विस का मार्केट प्राइस 5 लाख, जीएसटी 90,000, 18,95, 90,000 प्लस इंटरेस्ट प्लस सपोज पेनल्टी पे कर दिया. What about this 90,000? Whether my related party is eligible for input tax credit? Whether my related party is eligible for input tax credit, whatever taxes paid under investigation, because this tax I have not deposited so moto. This tax I have deposited on the intimation of the officer. Is it eligible for input tax credit to my distinct entity or to my related party? If you refer 17.5 blocked credit, किसी ने पढ़ा है 17.5 अच्छे से? उसमें ये एंट्री है, any tax paid under section 173, 174, 129, 122, these are not eligible for input tax credit. मतलब जो इन्वेस्टिगेशन में हम टैक्स भर रहे हैं उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. Unnecessary we are creating problem. So I am suggesting you for schedule 1 item, at least prepare one bill for rupees 100, lakh, 10,000, whatever clients think कि भाई मुझे अभी इनपुट ट्रांसफर करना है, डिस्टिंक्ट एंटिटी को लाइबिलिटी आ रहा है, मेरे पास इनपुट पड़ा है, 10 लाख का इनवॉइस बना दिया, 5 लाख का इनवॉइस बना दिया. मेरे पास टैक्स भरने को नहीं है, उधर ऑलरेडी क्रेडिट पड़ा है, 100 रुपए का बना दिया. You can decide based on your situation, right? इंपोर्ट का हमने कल देखा, आरसीएम. कितने लोग चेक करते हैं कि इंपोर्ट पे टैक्स पे किया है आरसीएम में? इट्स नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली, पर ठीक है. आरसीएम में कितने एंट्रीज है? अराउंड 20 एंट्रीज आर देयर. हाउ वी वेरीफाई ईच मंथ whether there is any expenditure which is taxable under reverse charge? सेल्स प्रमोशन में कौन सा आरसीएम आएगा? सपोज देयर इज अ हेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स प्रमोशन. व्हाट यू विल चेक in sales promotion? In profit and loss account, how you will check reverse charge mechanism? You have to check P&L debit side, whether there is a legal expenses, whether there is transport, right? Director's remuneration. Again, we checked 192, 194J. If 194J, GST under RCM is applicable. 192 GST not applicable. Right? Import of services. If place of supply is India, supplier is located outside India, recipient is located in India, it is taxable under reverse charge. Right? So I'm asking you,
Sales promotion, there is a head in profit and loss account, whether you will check for RCM or not. What you will check in sales promotion? Sponsorship. Sponsorship you usually debited in sales promotion. So import of services, where you will find import of services? How you will find import services in profit and loss account? Usually we ask client whether there is any foreign remittance outside India. If the client is like that, who used to make foreign remittances outside India, we ask under which heads you debited to the P&L account. If it is professional fees, royalty, what heads? If it is in traveling services, my employee went to the client place located outside India. He booked one hotel there. He enjoyed taxi rides, food. How it is taxable under reverse charge? Is there anyone? Expenditure is in foreign currency. Supplier is located outside India. Usually we think I have consumed services in India because I have debited P&L account. So whenever there is investigations, these points are raised. अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर ऑडिट जब डिपार्टमेंट के ऑफिसर आते हैं ऑडिट करने, तो व्हाट दे डू, दे टेक योर ऑडिटर्स रिपोर्ट, देयर फॉरेन एक्सचेंज आउटगो, फॉरेन एक्सचेंज इनवर्ड, तो वो बोलते हैं अच्छा ये आउटगो है ना, इसके ऊपर आप आरसीएम पे कर दो. तो व्हाट स्टैंड यू विल टेक? इट इज अ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. Whether the place of supply is in India, 3 condition has to comply. 1, supplier should be located outside India. Recipient is located in India. Both are complied. What about the place of supply? Yesterday we have seen in the case of restaurant, the location of the restaurant. Right? Passenger transport, where we board the vehicle. We have seen yesterday only place of supply. Manje, what it means is the place of supply is outside India. In these cases, traveling expenses, the place of supply is not India. Because it is not India, whether the transaction is taxable in India. Simple. These minute things we have to check entry by entry. Reverse charge के सब हेड हमको याद नहीं रहते, तो better one print one list of all reverse charge entries. अगर security services, in I am availing security services, whether it is taxable. Right. If I am availing services from a body corporate, it is under forward charge. If I am availing services from non-body corporate, it is under reverse charge. ये हमको मालूम चाहिए compulsory. In case of rent a cab, I am availing services as a rent a cab. How it will be taxed? Again, what is the constitution of myself? If I am a body corporate, I asked the speaker, I am a LLP, whether I am a body corporate. He said yes, as per the definition given in the GST law, LLP is a body corporate. But what about the RCM? No, RCM, for RCM, LLP is not a body corporate. For RCM, LLP is not body corporate. It is given in the notification 13/2012, 17. For the purpose of this notification, LLP should be treated as partnership. If I am availing as a LLP services of rent a cab, or I am providing services to my customer as a security services, you have to check the provisions. If there is anything missing, could be your client, could be your principal,
have not gone through this और उन्होंने उसका करेक्ट इफेक्ट ही दिया नहीं है. बहुत लोग आज भी renting of residential premises debited to P&L account, not paying GST. Director's remuneration, especially sitting fees, not paying GST, just because 192 में TDS किया है. But can you deduct TDS 192? Is it your salary? Are you paying in the capacity of employee? No, you are paying sitting fees in the capacity of a director. Then it should be deductible under 194J. Just because wrongly you have deducted under 192, can you say it is not taxable under GST? Nomenclature is not important in GST. You can name it anything, but it is taxable. So taxable. Just नाम change करने से taxability change नहीं होगा. Valuation primarily we have discussed labor cess and all. Labor cess is taxable. Even though debit note, I am debiting to my customer through debit note, taxability will be again as per the principal supply. अगर इनवॉइस में आप कुछ चार्ज नहीं कर रहे हो मगर यू आर इशूइंग डेबिट नोट, स्टिल इट इज टैक्सेबल एट द प्रिंसिपल सप्लाई. Credit note we have seen, it should be under section 34. This is valuation. Yeah. Circular number 76 is issued for TCS purpose. Molds and dies का example लिया था for the purpose of place supply. Suppose I am giving molds or dies to my customer for manufacturing of my product, castings and all. He has given yesterday one example. I am using die supplied by my customer. How it will affect my valuation? Whether it affects valuation, first of all. I am manufacturing door of a car, door. For that door, manufacturing of that sheet, door structure, I need a mold, big mold, and that is supplied by my customer, free of cost. Whether it affects my valuation. It is used for whose business? See, department has issued one notification for special evaluation of molds. It is 47/2018. You must read because it is given for valuation in the case of molds and dies and useful for many things. Whenever customer is supplying free of cost anything, you can apply this notification 47/2018. Mostly it is 47. In that notification, it is the theme of that notification is for what purpose you are using that die. If you are using for your business, then not a problem. If you are using for others' business, then it is a problem. Because section 16 said it should be used in the furtherance of business. You can take input tax credit only for the goods or services which are used in the course or furtherance of business. If I am giving my die to माधवी, भाई ये डाई ले लो और मुझे इसके दरवाजे बना के देना कार के, by using your input raw material. Madhvi is purchasing raw material. I have just conveyed him कि you purchase this JSB supplier, JSW supplier है हमारा, इनसे आप स्टील लेना,
इसका दरवाजा बना देना और मुझे सप्लाई करना है. Now he is manufacturing doors, and he is using my die for his business purpose, because manufacturing of door is whose business? His business. He is supplying door to me. In that case, input tax credit of that die is not eligible in my hands. Can you believe this? In normal parlance, you said ki no, I am manufacturing cars. Without door, how I can manufacture car? अगर हम मोल्ड नहीं देंगे उसको तो वो गलत बना देगा, दरवाजा फिट नहीं होगा मेरे कार को, तो मोल्ड तो मेरा ही देना चाहिए. But very clear notification, if it is used for the purpose of business of your job worker, your other's business, like the manufacturing of door is his business. He is using my die, input tax credit in the hands of principal manufacturer is not eligible. Point number 1. Point number 2, by using my die, he is reducing his manufacturing cost. It is a composite supply. Can I manufacture door without the use of die? No. It is a composite supply. I must consider the cost of die in my valuation. And there the concept of amortization came into picture. Or this is not a new concept. There was a provision in central excise law also, amortization of dies. And in GST also it is there. Many consultants are not giving effect to this valuation provision, especially amortization of dies. Whenever your client is manufacturing auto products, sheet products, or using dies of your customer or any material of your customer, you have to check provisions of section 15. Read with notification number 47/2018. Two implications, big implications. One, your customer is not eligible for input tax credit of that die. And two, the die cost you have to amortize to your customer. So transaction should be structured in a different way. Like you buy die as a door manufacturer and take money from the customer to buy that die as a deposit. Anyhow, you are no need to amortize. You can bill to your customer in a different way for the cost of die. You can add that value to your door cost or by any other way. But don't use die supplied by your customer free of cost or any material. In construction contract also, the practice is no, cement हमारा use करना पड़ेगा, steel हमारा use करना पड़ेगा. Your customer is giving free of cost cement. Again, there are Supreme Court judgments, favorable and against. कौन तकलीफ करके लेगा? डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं, हम तो जो तुम्हारे अगेंस्ट डिसीजन है वही यूज करेंगे. This Supreme Court judgment said कि whatever supplied free of cost by the customer it has to be added in valuation. आपको सीमेंट मिला है, आप उसका प्राइस ऐड कर दो. और हर एक कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन रहता है, वी आर नॉट गोइंग बियॉन्ड फाइनेंशियल्स. We are not going beyond financials. But whenever there is any contract, I request you to please review the contract. As an article, you review the contract. आपके प्रिंसिपल नहीं देखते रहेंगे तो भी as an article you review the contract. और आपको पूरा 50 पेज, 100 पेज, 200 पेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखना है. You just check consideration. Para, consideration. 1 para or 2 para. एक पेज भी नहीं पढ़ना है आपको. There are so many times there is a entry in schedule 2 hidden. This is also again a beauty of law. I am not. There is deeming entry in 2 schedule 2 declared services. That also many times you found in your contracts.
नॉन कॉम्पेट फीस गिवन वगैरह. Again, we have gone through 3B also. 3B में I have also mentioned about the circular issued in 2022 related to the presentation of input tax credit. Right? Don't mistaken. Whenever there is input of goods, show under input for input of goods, input of services, particular column. We have already gone through what is zero rated supply, exempt supply, nil rated supply, what is non-GST supply. You should mention that particular transaction as per the transaction. If it is a zero rated supply, mention under zero rated. If it is nil rated, nil rated. To be comparison. Now we are receiving notices for matching 3B versus 2B. You can't avail credit as per section 16 more than reflected in the 2B. It is not applicable for RCM and your import is concerned, but definitely you have to segregate 2B. Whatever is your transactions are not with respect to your client. 17.5 blocked credit, eligible credit, non-eligible credit, and only eligible credit we can take. 17.5 we have gone through already. किसका क्रेडिट मिलेगा किसका नहीं मिलेगा. अगर कोई एंट्री में सेस है, सेस पे किया है, 2B में सेस है, तो क्या ट्रांजैक्शन रह सकता है. सेस कार परचेस किया है, कोल्ड ड्रिंक्स है, क्या है, वेदर इट इज एलिजिबल, रेंट अ कैब है, फूड के रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, सेग्रीगेट. And what is it? Practice usually we follow. We train our client. We don't follow these provisions at our offices. We train our clients to follow this all. तो usually सिस्टम ही ऐसी रहनी चाहिए कि क्लाइंट ने ये सब करना चाहिए, क्योंकि डे टू डे ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल हमारा नहीं है. हमको पता नहीं चलता है कि किधर डेबिट किया है, किधर क्रेडिट किया है, एडवांस मिला है उसके ऊपर टैक्स पे किया है क्या, एडवांस पे टैक्स लगता है क्या, गुड्स के लिए लगता है, सर्विसेज के लिए लगे, राइट. तो एडवांस पे टैक्स पे किया है, एडवांस एडजस्टमेंट के ऊपर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा जब इनवॉइस इशू किया उसके अगेंस्ट. तो दैट प्रेजेंटेशन शुड बी मैचिंग. तो उसका जो कंट्रोल है, यू प्रिपेयर वन शीट फॉर योर क्लाइंट, उसको बोला ये प्रिपेयर करके रखो, जहां पे भी एडवांस पे टैक्स भरा है आप रेफर कर दो, और उसको एडजस्ट किया है तो उसको नॉक ऑफ कर दो. Classification. See, whatever topics we have covered now, these are all relevant to file 3B or 1. One of the topic is classification. There is huge disputes, or nowadays big industries are receiving notices from the department, and the notice value is more than 10 crores, 20 crores, 30 crores, in crores only. Classification disputes are in crores. अभी नेचुरल आइसक्रीम आपने पता है सबको, they used to pay GST at the rate of 5%. What is the actual rate? 18%. Ice cream parlor sells already manufactured ice cream and they do not have a character of a restaurant. Circular क्या बोल रहा है? They do not have a character of a restaurant. Ice cream parlors do not engage in any form of cooking at any stage. अभी ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया. आपके किसी का बेकरी का काम किया आपने, बेकरी वगैरह, they sell sandwiches, burgers in small cafes.
कोई किराना दुकान पे रख रहा है, कोई बेकरी पे रख रहा है, and they supplies to these all vendors. Now same theory will applicable to so many products. तो ये जो क्लिक है ना, ये रहना चाहिए। सी, मैंने अभी सिर्फ आइसक्रीम पढ़ा, तो आइसक्रीम के जैसा और क्या हो सकता है? आई एम ईटिंग सैंडविचेस, बर्गर्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री। बर्गर्स है, सैंडविचेस है, जो हर बेकरी पे या अभी इस पे मिल रहा है केक के शॉप पे, तो उसका टैक्सेबिलिटी 5% होगा क्या? इट इज नॉट मैन्युफैक्चर इन दैट कैफे। Again 18%. It will not come under the category of 5%. Classification is a big issue. Cold drink, you know, no? Beverages, different cold drinks, usually taxable at 28% plus cess. If served in the restaurant, 5%. If served in the restaurant, in the water bottle, can anybody add water bottle taxable at? See, beverages I am serving in a glass. If served in a glass, it is taxable at 5%. If I sell as a bottle, it is taxable at 28%. What about the water? Whether you will give same effect to water bottle? Beverages, I am giving in a bottle, taxable at 28%. Whereas I am giving in a glass, taxable at 5%. What about the bottle? I am not serving in a glass. I am giving bottle to my customer. अगर ग्लास में दिया तो पैसा देगा क्या कस्टमर? अगर मैं ग्लास में पानी दूं तो पैसा देगा क्या? वो बोलेगा ये फ्री का पानी है, राइट? तो हाउ इट इज टैक्सेबल? क्लासिफिकेशन, वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। और ऐसे बहुत एग्जांपल आएंगे अगर आप डीपली समझ के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करके रिटर्न फाइल करेंगे। नॉट सेल माइनस परचेस इज लायबिलिटी। यू हैव टू अंडरस्टैंड each and every aspect of your sale and purchase, including classification, because tax is equal to value multiplied by rate. So you have to understand what value, at what value I should pay tax and at what rate, right? तो पानी पे क्या है? पानी is a composite supply. Can you eat food without water? Act said no. You can't eat food without water. Even though you serve water in a bottle, it is taxable at 5% in a restaurant. These are all input tax credit condition we have already gone through. Just whenever you file return, you please take care of these conditions. I have just added 180 days presentation, reversal of if not paid in 180 days. Late fees, you know, it is auto calculated. Whether there is any late fees for GSTR1? अगर हम GSTR1 लेट फाइल करते हैं तो लेट फीस है क्या? कितने लोग बोल रहे नहीं है? जी पे लेट फीस है, हम पे नहीं कर रहे। आप समझे? लेट फीस इज देयर, वी आर नॉट पेइंग, राइट? वो 3B का तो ऑटो कंप्यूट करके अपने को डेबिट कर देता है वो, इसके लिए आप पे करते हो, और जितना कंप्यूट करता है उतना ही पे करते हो। एक्चुअली यू नेवर कैलकुलेट 100 हो रहा है, 500 हो रहा है, 2000 हो रहा है। अच्छा 2000 कंप्यूट किया, ठीक है 2000 भर दिया। ये सब जो हमने डिस्कस किया है, most of items in precautions are reconciliation in nature. क्या बोलते हैं जीएसटी में? एक्ट का कम फॉलो होता है, रिकंसिलेशंस का ज्यादा होता है। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो क्या था? एक्ट रिलेटेड, प्रोविजन रिलेटेड, कहीं ना कहीं उसको टच था लॉ का।
rules थे, notifications थे, circulars थे. Now this is the page for reconciliation. If you mistaken typo error, clerical error, or any reconciliation error, you found these type of notices from the department, para 69 to 83. So you have to avoid these parameters whenever you file return. Right? ये किसने देखा ये parameters? Beautiful parameters given by department. If 3B में ज्यादा डिक्लेयर किया है, 1 में कम किया है, 1 में ज्यादा किया है, 3B में कम किया है, आपने ये सब करेक्ट किया है, मगर 9 में कुछ और गड़बड़ कर दी, उधर एग्जाम टर्नओवर दिखा दिया, इधर तो एग्जाम था ही नहीं, राइट? तो रूल 42 का इफेक्ट नहीं दिया, उधर तो एग्जाम टर्नओवर आ गया, रूल 42 इफेक्ट नॉट गिवन, इंटरेस्ट नॉट पेड इवन दो लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न. ऐसा होता है, लेट फाइल हुआ और इंटरेस्ट नहीं पे किया, होता है ऐसे, इंटरेस्ट नॉट पेड. हाउ यू कंप्यूट इंटरेस्ट? फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट और फ्रॉम द 3B? फाइलिंग ऑफ डेट 3B का डेट लेते हैं अप टू, या डेट ऑफ पेमेंट लेते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए? Suppose due date is 20th of every month, you are filing on 25th, but you have paid taxes in time correctly. Taxes pay कर दिया मैंने 20th को, because of some reconciliation issue. I could not debit my cash ledger. Return 3B फाइल नहीं कर पाया मैं, तो रिकंसिलेशन पेंडिंग थे मेरे अक्टूबर के. देयर इज अ ड्यू डेट टिल 30th नवंबर. आपने देखा ना, 30th नवंबर तक मैं अमेंडमेंट को इफेक्ट दे सकता हूँ. तो क्लाइंट बोला अभी रिकंसिलेशन करना है 23-24 का, तो हम क्या करेंगे, 25 के बाद फाइल करेंगे रिटर्न. तो क्या ना, आई हैव टू पे इंटरेस्ट. Tax I have paid on 20th, but I am filing return on 25th. Usually department calculate interest till filing of 33B, right? E-way bill, e-invoicing, 2 topics, very important. किसी ने e-invoice को कंपेयर किया सेल्स से? ई-इनवॉइस का डेटा और सेल्स का डेटा मैच करते हो आप रिटर्न फाइल के पहले? अगर मेरा कोई एंट्री ईवी इनवॉइस में नहीं है, सेल्स रजिस्टर गिवन बाय कस्टमर सेल्स है, ई-वे बिल है, मगर ई इनवॉइस के डेटा में वो एंट्री नहीं है, हाउ यू विल गिव इफेक्ट टू दैट ट्रांजैक्शन? व्हाट आर द इम्प्लिकेशंस? ऍड करून टाकतो, संपलं. बाकी she said ki we just add that transaction even though there is no IRN generated. But what is the consequences of this? Whether my customer is eligible for input tax credit, whether my customer is eligible for input tax credit if the invoice is not having IRN, मिलेगा क्या कस्टमर को क्रेडिट? इनवाइस है, प्रॉपर इनवाइस है, सिर्फ IRN नहीं है, क्यों नहीं मिलेगा? See what he trying to say, it is a provisional. If it is not having IRN, it is not an invoice at all. It is not a tax invoice. So tax invoice is given under 31 and it is not given in 31, but the corresponding rule, in corresponding rule, they have mentioned whatever invoice, tax invoice, if don't have IRN, when it is required to be, it is not a tax invoice. If it is not a tax invoice, can it be an invoice under 16? Right? But it is not provisional.
It is not given in the law. It is given in the rules. Rules are provisional in nature, procedural in nature, not bind. You can't bind you to do anything. It is procedural in nature. तो कंडीशंस जो है उन्होंने लॉ में लानी चाहिए थी ई वे बिल, ई इनवॉइस का, मगर उन्होंने रूल अमेंड किया, नॉट एक्ट. It is not given in section 31. It is given in the rule, corresponding rule. Still we are following that e-tax invoice, if don't have IRN, is not a tax invoice. If it is not a tax invoice, you can say section 16 का जो एक requirement है कि you should possess tax invoice is not complied. So she said कि we just add that entry in GSTR1 and upload it. What about debit note and credit notes? It should also have IRN. Now the limit is 5 crores. So most of your clients are under e-invoicing, right? तो अगर डेबिट नोट क्रेडिट नोट का भी सेम इम्प्लीकेशन आएगा IRN के जैसा. If it is not, it don't have IRN, the document is not a complete document. You have to check each and every transaction should have IRN. So reconciliation should be complete. E-invoice, अगर ई-वे बिल ही नहीं बनाया कोई इनवॉइस का, the value is more than 1 lakh and कुछ गड़बड़ था आपके क्लाइंट को, he missed ई-वे बिल, क्या होता है? ई-वे बिल नहीं बनाया, आपके पास ई-वे बिल का डेटा है, आपके पास सेल्स रजिस्टर है, और जब आपने रिकंसिलेशन किया तो पता चला इसका ई-वे बिल नहीं बना, क्या होता है? बोल माधवी, सही? हाँ, नहीं, अभी पता चल रहा है ना, आज आप रिटर्न फाइल कर रहे हो GSTR1, आपने मैच किया ई-वे बिल का डेटा सेल्स से, कुछ छूट रहा है क्या? While filing GSTR1, you just reconciled e-वे बिल with sales register, और आपको पता चला कि एक सेल इनवाइस है जिसका वैल्यू मोर देन 1 लाख है, गुड्स का इनवाइस है जिसमें ट्रांसपोर्ट हुआ है मोटर व्हीकल से, और 100% ई-वे बिल बनना ही चाहिए था, नहीं बना है. क्या 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 नहीं समझा मुझे. नहीं, मूवमेंट ऑफ गुड्स से सब है ना. ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है तो वैलिड इनवैलिड कैसे हुआ? ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड ना. सेक्शन 16 आई हैव फुल्ली कंप्लाइड. इनवैलिड वैलिड ट्रांजैक्शन का कुछ नहीं है. What are the consequences? Like in 129, अगर वो गाड़ी पकड़ा जाता रास्ते में तो डिपार्टमेंट सेज कर लेता गाड़ी को, 200% पेनल्टी लगा देता उसके ऊपर. अभी तो गाड़ी भी पकड़ा नहीं गया, डेस्टिनेशन पहुंच चुका है. इफ इट इज ऑन द वे इन रूट, डिपार्टमेंट कैन सेज गुड्स, लेवी 200 पेनल्टी 129 में. अभी तो मेरा गाड़ी भी पहुंच गया ना, तभी तो मेरे पास रिटर्न के लिए आया ना वो. See, there is only general penalty, non-compliance. There is only general penalty for non-preparation of e-वे bill. That can also be levied only once, not for each e-वे bill. So you have to check e-invoicing data, you have to check e-वे bill, you have to check sales register, financial statement, schedule 1, so much things to check, but don't check each and every transaction. Keep track. आपको क्या करना है? Whenever you prepare 3B, आपका डेटा मैचिंग, हर बार उसको आपको लॉक लगाना है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिखा रहा है वहां पे लॉक लगा दिया. What is liability in financials? आप अगर टैली में
ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी में जाते हो, F6 किया, व्हाट इज पेएबल 10 lakhs, पेएबल 10 lakhs, whereas 3B calculations is 15 lakhs. How it can be? 3B में आप क्लाइंट को बोल रहे हो 15 lakhs पे करना है, बट टैली में आपको 10 lakhs ही दिखा रहा है पेएबल. ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आउटपुट लाइबिलिटी है, इनपुट क्रेडिट है. ड्यूटीज एंड टैक्सेस फोल्डर है जीएसटी, उसमें आउटपुट भी सारे एंट्रीज है, इनपुट के भी सारे एंट्रीज है. तो ट्राई टू आस्क क्लाइंट कि रिकंसाइल दिस लेजर, स्पेशली ड्यूटीज एंड टैक्सेस. इट विल बी अ वेरी गुड प्रिकॉशन कि कहीं पर कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है. दैट 5 lakhs डिफरेंस, आई वांट रिकंसिलेशन. आस्क योर क्लाइंट कि आई नीड रिकंसिलेशन ऑफ दिस 5 lakhs. अगर कहीं शॉर्ट पेमेंट हुआ है, कहीं पे हमने एक्सेस क्रेडिट लिया है, दिस ऑल रिकंसिलेशन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल्स. ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेजर, इफ वी ट्राई टू रिकंसाइल विथ योर 3B लाइबिलिटी, क्रेडिट नहीं लिया क्योंकि 2B में नहीं दिख रहा है. So many entries there are in tally, but we can't take credit because it is not reflected in 2B for 2-3 years. कुछ तो चल रहा है. We have to close somewhere. Na? Again, RCM, you can track ledgers, security ledger, legal fees ledger, import के ledger. You can take yearly data in one sheet. Every month you can fill the data. And उसका जो टोटल है, now this month I am filing return for कौन सा, फरवरी, Feb. So I can check from April to Feb what expenditure I have incurred. Security पे 5 lakhs, whether I have paid tax on 5 lakhs. So these are the checking points. आपका 3B में टर्नओवर है, कितना हो गया है? 20 crores. What is the turnover in your profit and loss account? 25 crores. Okay, export also I have declared. Okay, exempt turnover also I have declared. In totality it is matching. No, not matching. क्यों नहीं मैच हो रहा है? Some grouping I have made to the P&L debit side. ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो रिकवर किया हमने सेल्स में, उसका गलती से ग्रुपिंग P&L के डेबिट साइड को हो गया. जेवी से बुक किया एंट्रीज, किधर किया है. तो दीज आर द ट्रैकिंग पॉइंट्स यू शुड नो whenever you reconcile your books with the return. These are all notices, types of parameters under which you will receive notices. Ineligible ITC claimed from non-genuine taxpayers. Is it in your control? No, you can't check. If your client is genuine, this type of notices will not be received. Excess output tax in GSTR 1 compared to 3B or 9. ऐसा कुछ होता है तो you have to amend GSTR 1 in time. Up to 30th November you can amend GSTR 1. Up to 31st December you can file 99NC. तो जो भी अमेंडमेंट्स है आपने सितंबर से चालू कर देना चाहिए. रिकंसिलेशन ऑफ फाइनेंशियल्स विथ योर रिटर्न्स, क्योंकि सितंबर में आप टैक्स ऑडिट करते हो, तो टैक्स ऑडिट में ही आपका जो भी मिस्टेक है अगर निकल जाता है तो योर रिटर्न्स विल बी इन लाइन विथ फाइनेंशियल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर अमेंडमेंट नहीं होते तो ऐसे आपको नोटिसेस मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्का मिलेंगे. GSTR 1 में ज्यादा हो गया टर्नओवर, 3B में कम है. अगर जेन्युइनली अगर मिस्टेक हो गया है तो यू कैन पे इट विथ इंटरेस्ट. ई-वे बिल का कंपैरिजन विथ 3B. डिपार्टमेंट इज नाउ कंपेयरिंग 3B डेटा विथ ई-वे बिल डेटा. Again, nowadays they are issuing notices for GSTR 7 with 3B. अगर आपका किसी ने TDS कट कर दिया है, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, TDS इज कंपल्सरी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अबव 2,50,000. TDS कट हुआ है 10 crore के ऊपर, मगर आपका वैल्यू 3B में 8 crores है. TDS is deducted including GST, whereas your 3B value is excluding TDS, GST. तो where you have to match these two. GSTR 7 मतलब आपका TDS credit, you have to match with your 3B and 1. किसी ने किया आज तक? नहीं किया.
करना जरूरी है, क्योंकि अभी नोटिस आ जाएगा। हम क्या करते, खुश हो जाते, टीडीएस क्रेडिट आया सर, अभी 5 लाख आपको कम पे करना पड़ेगा। अरे क्यों सर? वो टीडीएस का मैंने कैश लेजर में कन्वर्ट कर लिया है। जो टीडीएस कट किया था उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके कैश लेजर में। तो 5 लाख रुपया अभी आपको कम पे करना पड़ेगा। कितना मस्त है, क्लाइंट खुश, मतलब 5 लाख बचाए मेरे। मगर उसका रिकंसिलेशन, उतना टर्नओवर आपने 3B में दिखाया है क्या? दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल रिसीव नोटिसेस। अभी उसके रीजंस बहुत है। टीडीएस सर पिछले साल इनवाइस किया था उन्होंने, टीडीएस अभी किया है। इनवाइस तो हमने पिछले साल ही किया था, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनको कुछ बोल नहीं सकते। उन्होंने टीडीएस इस सर्व कर दिया, और वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। ये टीडीएस टीसीएस है इसमें नोटिसेस। सी 7 and 8 नहीं क्या, सीरियल नंबर 7 and 8 ऑलरेडी डिपार्टमेंट हैज इशूड पैरामीटर फॉर दैट। जी 2B में आरसीएम का लायबिलिटी आता है। योर सप्लायर इज फाइलिंग GSTR1 and just mentioning yes under reverse charge mechanism, so that these entries are reflected in your 2B. So check 2B also. Whenever you reconcile 2B or verify 2B, just check whether there are some RCM entries on which client is liable to pay tax under reverse charge, and he has not included these entries in your liability part. बहुत बार क्या होता है, it is really beneficial, 2B में दिखाता है IGST पे करना चाहिए, और आपका अकाउंटेंट रहता ना क्लाइंट का, वो दिमाग ही नहीं लगाता, वो डायरेक्टली लेगा वैल्यू CGST 9%, SGST 9%. He is not using his brain, especially in case of GTA. GTA में whether the taxation is under IGST or CGST, intraday, they don't use brain. Transport charges है 2.5% under CGST और SGST, so simple. मगर हमको 2B में पता चलता है, नहीं अरे IGST का टैक्सेबल है, बिकॉज माई सप्लायर इज लोकेटेड अदर स्टेट। तो किधर मिस्टेक हो रहा है ना, दैट कैन बी क्रॉस चेक्ड थ्रू 2B। हो गया टाइम, करेक्टली हुआ। क्या क्या See, department will not give you credit. You have to fight for that. The solution is, as per the FAQ given by the department, you mention that transaction under B2C for that month. You add that transaction under B2C. You read FAQ for the e-invoicing is given. In next month, when you realize this mistake, you issue credit note to your customer, e-credit note, e-invoicing wala, and also issue e-invoice in the next month. Whenever you realize this, it is given in FAQ. मतलब मैंने ही बोला सेक्शन 34 के अलावा क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते, अभी मैं ही बोल रहा हूं आपको कि यू कैन इशू क्रेडिट नोट फॉर दिस पर्पस, बिकॉज इट इज गिवन इन FAQ. डिपार्टमेंट ने इशू किया हुआ है FAQ. तो बेटर टू कंप्लाई, बेटर है, मतलब फॉर सेफ एंड प्रॉपर कंप्लायंस. तो correct your returns before time, understand the provisions of reverse charge, apply on each item in the profit and loss account, financials and non-financial transaction. अभी sale of fixed asset, taxability कैसे होता है? Many times not reflected in profit and loss account, but tax is payable. Profit or loss we book na, profit or loss we book it to the profit and loss account on sale of asset. तो उसका टैक्सेशन कैसा होगा? किसी ने किया है फिक्स एसेट का सेल?
Sale of fixed asset calculation. Anyone? No? Okay. It is not like that. You can't pay GST only on transaction value in case of fixed asset. You heard Rule 43? In case of capital goods, same 5% per quarter input tax credit is eligible in case of capital goods. Heard na somewhere? What is 5% eligibility of input tax credit in case of capital goods? Considering the life of the asset is 5 years. Per year, you are the owner of 20% input tax credit. You can avail today 100%, but actual ownership only 5% per quarter. अगर आप 2 साल यूज करके कोई एसेट बेच देते हो तो यू कैन ओनली क्लेम क्रेडिट अप टू 40%. 60% यू हैव टू रिवर्स. तो आपको कंपेयर करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी रिवर्स्ड, दैट इज 60%, and the tax on transaction value. She said we pay tax on transaction value. Whichever is higher you have to pay. Whichever is higher. This should be the calculation method, not directly on the transaction value. Point number 2, used vehicle. There is a notification 8/2018. Used vehicle, if the CC is less than 1200, 12% GST. If the vehicle CC, engine capacity, is more than 1200, tax is 18%. But you have to calculate depreciation, written down value as per Income Tax Act. Even though yours is a private limited company, you have to calculate depreciation as per Income Tax Act for that vehicle and calculate written down value. If there is a profit, on the profit portion you have to pay GST as per the CC capacity, 18% or 12%. If there is any loss, no GST is payable. So vehicle sale, different taxation. Other than vehicle sale, different taxation. I have sold MIDC plot, which is reflected in my asset side. MIDC plot. How taxation will come? किसी ने सुना है sale of MIDC plot taxation? Anyone? No, we are discussing GST. I am not good in income tax. Whether it is taxable plot, whether it is a Schedule 3 item. Anyone? MIDC plot. I own one MIDC plot in Ranjangaon. Any MIDC. Now I am selling this plot to the independent customer. As per the advance rulings received, in this case, it is a long lease transaction with the MIDC. Whenever supplies from MIDC to the customer, it is not taxable. They have issued exemption notification. But when the supplies from customer to another customer, it is taxable under GST. 18% GST. Many balance sheets where there is a transaction of sale of MIDC plots, tax is not paid. Right? इसने ITC 04 फाइल किया, ITC 04. कल हमने देखा जॉब वर्क के लिए हम गुड्स बाहर भेज सकते हैं ITC के सेशन में. We can send goods for job work outside for a year. Goods should be received in a year. Capital goods के लिए ज्यादा पीरियड है. Wherever there is a manufacturing company, they send goods for job work to other companies. Welding करके लाना है, cutting करके लाना है, some small processes, bending करके लाना है, wire cutting करके लाना है, छोटा छोटा प्रोसेस करके बाहर से लेके आते हैं. They send goods to other companies. When we send goods to other companies, primary condition is
to this transaction, you should intimate to the department. And how you can intimate? By filing ITC 04. This is a must transaction, right? Job work भी एक अलग topic है full. Whenever goods are not received in time, you have to reverse input tax credit, right? Just one question. I have purchased goods from the vendor. I have not paid that value of the invoice in 180 days. I have reversed input tax credit. Whether interest is liable. Interest is liable. Whether I can use, I have not utilized that input tax credit. From the availment till reversal, I have not utilized that input tax credit. It is lying in my credit ledger. You should read provisions word by word. It says not reversal. You have to pay as your output liability. What is the provision? You have to pay liability as your output liability. That is not reversal. Reversal under 53, interest is not applicable. But this is not a case of 50 subsection 3. It is a case of 50 subsection 1. Late payment of tax and interest is applicable. Even though you have not utilized input tax credit, interest is applicable. और ये कब आता है? जब इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिसर आते हैं, वो बोलते हैं आप थोड़ा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दीजिए डिलेड पेमेंट का. आप बोलते हैं मैंने तो यूटिलाइज ही नहीं किया. When I have not utilized my credit, interest is not arised. Simple, सबको पता ही है. Basic provision है. Input I am availing, but I am not utilizing input tax credit. Interest is not applicable. But for delayed payment beyond 180 days, interest is applicable even though you have not utilized the input tax credit. Very good provision. Beautiful. You have to add this input tax credit reversal as a liability for calculation of interest. There is a penalty for one delayed filing of one we have covered. Related party we have covered. Schedule 1 very important. अगर किसी ने रिटर्न फाइल कर रहे हो आप तो डू चेक related party transactions. I have visited one marriage function. So I met one owner of the banquet hall. तो वो बोला सर ये जो banquet hall है ना ये मेरा है. अगर आपको इंस्टीट्यूट के काम के लिए अगर कुछ चाहिए तो आप बता दीजिए मैं आपको रीजनेबली करवा दूंगा. बोला ओके वेरी गुड. बोला सर ये आप जो रिसिट्स लेते कैसे लेते? बोला सर ये मेरा पार्टनरशिप फॉर्म है मेरा और मेरे बेटे का. तो वो इनवाइस फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म. तो हम यूजुअली पूछते कौन है तेरा सीए? बोला वो बोला ओके आई नो हिम. तो ये लैंड किसका है? सिटी में है. बोला इतना बड़ा लैंड 10-15 एकड़ का लैंड सिटी एरिया में है. नहीं बोला मेरा ही है. मैं बोला मेरा मतलब किसका? बोला वेदर इट बिलोंग्स टू पार्टनरशिप फर्म. बोला नहीं नहीं मेरा है. मैं बोला ये तेरा है मगर ये पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस ले रहा है ना. बैंक्वेट हॉल का रिसीट्स जो है उसके सीए ने क्या किया उसको प्लानिंग करके दिया है कि हम पार्टनरशिप में बैंक्वेट का हॉल का रिसीट लेते हैं. तो दे डू बिजनेस अंडर पार्टनरशिप बट द लैंड बिलोंग्स टू दैट ओनर. उसका एंसेस्ट्रल लैंड आया है तो उसको हेरिडेटरी उसको मिला है वो लैंड. जो XYZ बंदा मिला था मुझे द ओनरशिप बिलोंग्स टू हिम नॉट हिज सन. अभी तक उसके बेटे के नाम पे वो लैंड हुआ नहीं है. नाउ इट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन.
supply from a partner to the partnership. अब वो लैंड था 10 एकड़ का, अगर मार्केट प्राइस में लूँ उसका 10 रुपया स्क्वायर फीट, तो 4 लाख स्क्वायर फीट का प्लॉट है, महीने का रेंट कितना हो गया? 40 लाख। महीने का रेंट 40 लाख, साल का 5 करोड़ अराउंड। 1 करोड़ तो जीएसटी आ गया उसके ऊपर, और 5 साल का पिछले 5 करोड़ प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। मैं बोला सर इतना आपको नोटिस आएगा? वो शॉक हो गया। वो बोला सर ऐसे कैसे होगा, ये तो मेरा ही पार्टनरशिप फॉर्म है, मेरा ही लैंड है। सी द प्रोविजंस ऑफ लॉ। आपको लगेगा ये क्या है, नॉन कंसिडरेशन, ठीक है, रिलेटेड पार्टी है, वेरी सिंपल। मैंने क्रॉस चार्ज आपको डिस्टिंक्ट पर्सन का एक एग्जांपल दे दिया। ब्रॉड, वेरी ब्रॉड, यू कैन अप्लाई दिस प्रोविजंस एनीवेयर। आपका ऑफिस है, क्लाइंट के पास जाते हो, बाहर 10-15 पार्टी लगा हुआ रहता है, XYZ लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, इतना चालू कर दिया है उसने, अपने को भी 15 फाइल मिल गया, उधर 15 नाम आ गए, राइट? पर यू सी द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अगर 15 पार्टी आया है तो ऑफिस बिलोंग्स टू विच कंपनी? सपोज सबसे पहला उसका प्रोप्राइटरशिप रहेगा, तो ऑफिस बिलोंग्स टू हिज ओन नेम, प्रोप्राइटरशिप। उधर ही प्राइवेट लिमिटेड का बिजनेस कर रहा है, उधर ही पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहा है। रेंट का इनवाइस दिया उसने प्राइवेट लिमिटेड को, पार्टनरशिप फर्म को। बाकी जो 15 पार्टी लगाया है उसने, LLP, ये वो फलाना, बाकी सबको रेंट का इनवाइस गया है क्या? दे ऑल आर यूजिंग दैट ऑफिस प्रीमाइसेस, दे ऑल आर यूजिंग वन अकाउंटेंट पेड एट 30,000 पर मंथ। एक ही अकाउंटेंट 15 कंपनी का अकाउंटिंग कर रहा है ना, क्या नहीं कर रहा है? You face this day to day. Have you consulted that client to issue invoice for cross charge related party? रजिस्ट्रेशन करते वक्त अगर 2 पार्टनर है तो उधर जो एड्रेस का प्रूफ लगता है उसमें उन्होंने कंसेंट अगर दिया रहेगा। Boss, consent is procedural part. I am talking about taxation. Consent दे दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, not a problem. हो तेरा रिजेक्ट हो, पास हो, सेकेंडरी। हम टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। अगर एक फर्म का तुमने कंसेंट दिया है तो आपको पता चाहिए वो पार्टनर ने कंसेंट दिया है, उसका ओनरशिप है, तो उस पर टैक्सेशन आएगा कि नहीं आएगा। दैट टाइम ऑल्सो यू कैन कन्वे योर क्लाइंट कि बॉस इस पे टैक्सेशन आ जाएगा। बोलो काय बोलायचं? असं होतं का नाही रेग्युलरली? एक बाहेर पाट्यात बघतो ना आपण, 4-4, 5-5 तरी असतातच मिनिमम. Taxation arise. Schedule 1 is very dangerous in GST. कितने लोगों ने चेक किया है कि अपने क्लाइंट के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, साई बघतोय क्लायंटच्या बाहेर प्रत्येकाचा जीएसटीचा लागलेला आहे, जीएसटी नंबर लागलेला आहे. Start from there, take registrations, details, whether all premises are covered, whether directors, partners details is incorporated correctly, place of supplies are covered. These are not covered in my today's topic because it is only related to the written filing, but these are the very basic things you should follow. And when you perform your duties as an article, but with ownership, you develop your confidence, and confidence comes with the knowledge. बहुत बार हमको डर लगता है, that fear is losing your confidence, but fear अगर निकालना है तो that key is a knowledge. If you develop your knowledge, you will be fearless, and with fearless you will be confident. And articleship, you learn read, write and speak. In 3 years what you do, or 2 years, you learn read, write and speak. This can be happen only through the confidence building. ये motivation.
एमओसी कुठे? चलो. With this, I end my session. I really thanks to Pune Vikasa for giving me this opportunity and beautiful audience who listen patiently. Thank you, everyone. Thanks a lot. Thank you, sir. What else can be a better way to understand the provisions than to know the implications of what can go wrong? I invite Ms. Neha Ved Pathak, the editor of Pune Vikasa, to propose the vote of thanks. Thank you, Tanvi. With this, we come to an end to this wonderful session, 5-day series on GST. I would like to thank Ahmednagar, Anand, Bhavnagar, Dhule, Kolhapur, Nanded, Navsari, Pimpri Chinchwad, Sangli, Satara, Surat, and Thane branches of Vikasa of ICI for joining us on this series. I would like to thank CA Rajesh Agrawal sir for taking such a wonderful session. I would also like to thank everyone who has been with us since day one and who has joined us during the journey. Special thanks to our Vikasa team and branch staff for making this a wonderful series and a success. मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारे अच्छे सेशंस में at CS का अपना घर ICI भवन. Thank you. Vikasa election about Vikasa election everyone knows. साई थोड़ा बता दे एक मिनट. Session end.